Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the physics and the branches of physics. The physics and the branches of physics is our today's topic. Now the topic number one, or the chapter number one, is the physical quantities and units. This is the chapter name. And our today's topic is physics and the branches of physics. This is our today's topic. So two things today we will study: what is physics and what are different branches of physics. So first we will study what is physics. We define what is physics. That is the branch of science in which we study the properties of matter, energy and their mutual relationship is called physics. The branch of science in which we study the properties of matter, energy and their mutual relationship is called physics. So in physics we study the properties of matter. We study the properties of matter and we study about energy. And then what is the relationship between matter and energy? What is the relationship between matter and energy? This we study in physics. There is another definition of physics, that is the science of accurate measurement is called as physics. The science of accurate measurement is called as physics. In physics we measure different things, different quantities. That's why the physics is defined as the science of accurate measurement is called as physics. In physics we study the properties of matter. And what type of properties? Physical properties of matter. We study the physical properties of matter. So what are physical properties? The size of a body, its mass, its volume, its energy, its density. These are the physical properties we study in physics. So in physics we study the physical properties of matter, and these are different physical properties which are given here. Also we study about energy. We study about energy and the physics. That is what we study in physics. That is what is energy, then the types of energy, then the sources of energy, how energy converts from one form to the other form, and how we take benefit from energy, and how we save the energy. All these things we study in physics. That is what is energy, the different types of energy, sources of energy, how we convert energy from one form to the other form, how we take benefit from energy, and how we save the energy. This we study in physics. Also the third thing which we study in physics, that is what is the relation between matter and energy. What is the relation between matter and energy? This we study in physics. Now here what's mean by relation? That relation mean how matter converts into energy and energy into matter. How matter converts into energy and energy into matter. This relation we study in physics. Also another thing we study in physics, that is we measure different physical quantities. So the job of physics is how accurately we can measure a physical quantity. How accurately we measure a physical quantity. We try to measure physical quantities accurately. We try to measure physical quantities accurately. So accurate measurement is made in physics. So accurate measurement is made in physics. So that's why physics is defined as the science of accurate measurement is called as physics. The science of accurate measurement is called as physics. Next, the branches of physics. We study here the second thing, the branches of physics. Now physics is a very vast subject,
Its ranges from microparticles, electron, to macro objects like sun and stars. From electron, smallest particle electron, to the macro particles sun and stars. Also from slowest motion to the fastest motion like that of light. So this is the range of physics. So in physics we study the micro things and the macro things. Also in physics we study the slow motions and the fastest motion. This is the range of physics. Also in physics is applied in all the fields like industry, agriculture, medical, engineering, education, research, defense, and transport, communication. So in different fields physics is applied. So physics is a very vast subject. Physics is a very vast subject. It is applied in different fields. So this shows that its range is very vast. Range of physics is very vast. So to make the study of physics easy, it is divided into different branches. Since the physics is a very vast subject, so to make the study of physics easy, it is divided into different branches. Now different branches of physics are general physics, which is also called mechanics, thermal physics, waves, light, sound, electromagnetic waves, electricity, magnetism, solid state physics, geophysics, electronics, atomic physics, nuclear physics. All these are the branches of physics. So to make the study of physics easy, it is divided into different branches, and these are different branches. These branches cover different areas of life. These branches are applied in different areas of life. So we discussed these branches and what is the role of these branches. We discussed these branches and what is the role of these branches one by one. Now number one, first branch, the general physics, which is also called mechanics. What we study in general physics? In general physics we study the motion of objects and the forces acting on these objects. What we study? The motion of objects and the forces acting on these objects. This we study in general physics. And also we study what? We study measurement of physical quantities, their units and system of unit. This we study in general physics. So in general physics what we study? The motion of objects and the forces acting on these objects, and measurement of physical quantities, their units and system of unit. This we study in general physics. The second branch is what? The thermal physics. What we study in thermal physics? In thermal physics we study about heat energy and its related processes like melting, boiling, evaporation and transmission of heat from one point to the other point. This we study in general physics. So that branch of physics in which we study about heat energy and its related processes like melting, boiling, evaporation and transmission of heat is called as the thermal physics. Third branch is waves and oscillation. Waves and oscillation. So the branch in which we study about waves and their relation to oscillatory motion is called waves and oscillation. The branch in which we study about waves and their relation to oscillatory motion is called waves and oscillation. So in waves we study what is wave and what is the relation of the waves with oscillatory motion. So here we study what is waves, how wave is created, and what are the properties of waves. This we study in waves and oscillation. Next branch is optics, which is also called light. Now what is optics? The branch in which we study about light and its properties is called optics. What we study in optics? The branch in which we study about light and its properties is called optics. Now what type of properties we study in optics? That is reflection, refraction, dispersion. These properties we study in optics. Next branch is sound. What is sound? The branch in which we study about sound and its properties is called sound. The branch in which we study about sound and its properties is called sound. Now what we study? How sound is produced, how sound travels from one point to another point, how sound is received.
what is pitch, what is quality. These are the properties we study in sound. Next branch is electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Here we study what are electromagnetic waves, their types and their uses. So in this branch we study what are electromagnetic waves, what are different types of electromagnetic waves, and what are the uses of electromagnetic waves in daily life. This is the electromagnetic waves. And now here we study what electromagnetic waves, that is what are X-rays, what are gamma rays, what are microwaves, what are radio waves, what are infrared rays, what are ultraviolet rays. These are different electromagnetic waves. So these we study here in this branch. Next, electricity. This is also a branch of physics. How we define it? The branch in which we study about charges is called electricity. The branch in which we study about charges is called electricity. Now, in electricity, we study about two types of charges. That is the charges at rest and charges in motion. Two types of charges we study. So, electricity, that's why electricity has two sub-branches. Electricity has two sub-branches. That is, first branch of electricity is static electricity, and second branch is current electricity. These are the two branches of electricity. So electricity has these two branches, static electricity and current electricity. In static electricity we study about the charges at rest, and in current electricity we study about the charges in motion. These are the two branches of electricity. These are the branches. Next is solid state physics. What is solid state physics? The branch in which we study about crystalline solids is called solid state physics. What is solid state physics? The branch in which we study about crystalline solids is called solid state physics. Now, what are crystalline solids? The crystalline solids are those solids in whom the particles are arranged in a proper way. Those solids in whom the particles are arranged in a proper way are called crystalline solids. So the crystalline solids are studied in solid state physics. Next branch is magnetism. Now, what is magnetism? The branch in which we study about magnet and its related processes is called magnetism. The branch in which we study about magnet and its related processes is called magnetism. So here we study what is magnet and what are the related processes of the magnet. So this we study in magnetism. Next, electronics. What is electronics? The branch in which we study about electronic devices and electronic circuits is called electronics. The branch in which we study about electronic devices and electronic circuits is called as electronics. Now, what are different electronic devices? In electronics, we study about diode, transistor, ICs. These devices are studied in the electronics. And what is the role of these devices in the circuit? This we study in electronics. Next is nuclear physics. The branch in which we study about nucleus and nuclear reactions is called nuclear physics. The branch in which we study about nucleus and the nuclear reactions is called nuclear physics. Also, we study in the nuclear physics, that is the applications of nuclear physics in different fields. This is also studied in nuclear physics. So different nuclear reactions like fission reaction, fusion reaction, we study in nuclear physics. The next branch is plasma. Now, what is plasma? The study of plasma is called as the plasma physics. What is plasma physics? The study of plasma is called as the plasma physics. So now what is plasma? The plasma is the ionized state of matter.
Ionized state of matter is called plasma. Now this ionized state of matter is studied in the plasma physics. Next is the elementary particle physics. Elementary particle physics. Now what is this branch? The study of fundamental particles and their relation between them is called elementary particle physics. What we study here, the study of fundamental particles and relation between them is called as elementary particle physics. Now what are different elementary particles like leptons, quarks, photons, bosons? So we study about these elementary particles and relation between these particles in the elementary particle physics. Next is atomic physics. What is atomic physics? The study of structure and properties of atoms is called atomic physics. The study of structure and properties of atoms is called atomic physics. So what is the structure of atom and what are different properties of atom? This we study in atomic physics. Here we study portion of atom outside the nucleus. Here we study the portion of atom outside the nucleus. So all the portion of the atom outside the nucleus we study in atomic physics. Next branch is geophysics. Now what is geophysics? The study of earth, its structure and its atmosphere on the principles of physics is called geophysics. So what we study in geophysics? We study about earth, its structure and its atmosphere by using the principles of physics is called geophysics. So in geophysics we study about the earth, its structure and its atmosphere by using the principles of physics. That is called geophysics. So what we study in geophysics about how we have earthquake, how we have earth magnetism, and we study about weather by the geophysics. Next is biophysics. What is biophysics? The study of biological systems by using the principles of physics is called biophysics. What we study? The study of biological systems by using the principles of physics is called biophysics. So in biophysics, we study the biological systems by using the principles of physics is called biophysics. So that is how we study the living objects by using the techniques of physics. By using the techniques of physics, we study living objects. So this we study in biophysics. Next branch is thermodynamics. What is thermodynamics? The branch in which we study the transformation of heat energy into mechanical energy is called as thermodynamics. What we study? The branch of physics in which we study the transformation of heat energy into mechanical energy is called thermodynamics. Like the heat engine. In heat engine, the heat energy is converted into mechanical energy. So this we study in thermodynamics. Next is astrophysics. What is astrophysics? The branch in which we study about heavenly bodies and space between them is called astrophysics. So in astrophysics, what we study, the branch in which we study about heavenly bodies and space between them is called astrophysics. So what we study in astrophysics about sun, moon, stars, and what is the distance between these stars, moon. So this we study in astrophysics. Next branch is relativity. What is relativity? The branch which gives the concept that all the processes, all the events and all the occurrences and all the measurements are relative, and there is no such thing like absolute is called relativity. So this branch gives the concept that all the processes, all the measurements in the universe are relative, and there is no such thing like absolute. That's why it is called relativity. So in relativity we measure
we study that all the processes are relative, all the measurements are relative, all the occurrences are relative. So that's why it is called relativity. In relativity, we study the high speed objects. We study the high speed objects like motion of electron or motion nearly equal to light. This we study in relativity. Next is the health physics. What is the health physics? The branch in which we study the harmful effects of radioactive rays on living bodies and safeguarding from these rays is called health physics. So the branch in which we study the harmful effects of radioactive rays on living bodies and safeguarding from these rays is called health physics. So in health physics, we study, that is, what are the harmful effects of radioactive rays, that is alpha, beta, gamma rays. What are the harmful effects of alpha, beta, gamma rays on living bodies and how we can protect ourselves from these rays. This we study in health physics. Next is quantum physics. Quantum physics, the branch which gives the concept that energy travels in the form of quanta, particle, is called as quantum physics. So what we study in this branch? The branch which gives the concept that energy travels from one point to the other point in the form of quanta is called quantum physics. Now quanta is what? Quanta is a particle. It means that energy travels from one point to the other point in the form of particles. So physics related to these particles is called quantum physics. So quantum physics gives the concept that energy travels from one point to the other point in the form of particles, and these particles are called quanta. So physics in which we study about quanta is called as quantum physics. Now next branch is statistical physics. What is statistical physics? The branch of physics in which statistical methods are applied is called statistical physics. The branch of physics in which we apply the statistical methods. The branch of physics in which we apply the statistical methods to the physical problems is called statistical physics. So in statistical physics, we study the physics problems by using the statistical methods. That's why it is called statistical physics. So all these are the branches of physics. So in today's lecture we have studied what is physics and what are different branches of physics. तो आज का हमारा लेक्चर है फिज़िक्स क्या और फिज़िक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस क्या क्या हैं. सो सबसे पहले फ़िज़िक्स क्या है. फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन क्या है. तो हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है. इस स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं. या फिज़िक्स की दूसरी डिफिनीशन क्या है? द साइंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. ये वो ब्रांच है जिसमें हम एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में. तो फिज़िक्स में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ते हैं. पहली चीज़ हम पढ़ते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़. कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में. और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? किसी चीज़ का साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ ए बॉडी, उसकी मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है. ये चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं. इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं हम फिज़िक्स में? हम फिज़िक्स में एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या है, एनर्जी की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स क्या हैं, एनर्जी के मुख्तलिफ़ सोर्सेज क्या हैं और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं और एनर्जी का हमें बेनिफिट क्या है, हमें फ़ायदा क्या है एनर्जी का, और एनर्जी को हम सेव कैसे कर सकते हैं ताकि एनर्जी ज़ाया ना हो. ये चीज़ हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में. तीसरी चीज़ फिज़िक्स में हम जो पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक़ क्या है, इस ताल्लुक़ को हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं. सो रिलेशन बिटवीन मैटर एनर्जी क्या है, ये चीज़ें पढ़ते हैं. अब फिज़िक्स में हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं और साइंस में ये कोशिश होती है कि हर एक क्वांटिटी को हम एक्यूरेटली मेजर करें.
सो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सो एक्यूरेट मेजरमेंट इज मेड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए फिजिक्स की एक डिफिनीशन है, द साइंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स की मुख्तलिफ डेफिनीशंस हैं जो हमने स्टडी की हैं। आगे है फिजिक्स की ब्रांचेस। अब फिजिक्स जो है एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक इसमें पढ़ते हैं? इसमें छोटी चीज़ इलेक्ट्रॉन से लेकर बड़ी चीज़ें सन और स्टार्स तक पढ़ते हैं। तो और इसके अलावा स्लो मोशन से लेकर फास्टेस्ट मोशन तक हम इसमें पढ़ते हैं। इस तरह फिज़िक्स हर एक फील्ड पे अप्लाई होती है। मसलन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, रिसर्च, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ फील्ड्स पे फिज़िक्स अप्लाई होती है। तो फिज़िक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसका रेंज जो है बहुत ही वास्ट है। सो फिज़िक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फिज़िक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसकी ब्रांचेस क्या है? जनरल फिज़िक्स है, थर्मल फिज़िक्स है, वेव्स एक ब्रांच है इसकी। इस तरह इसकी ब्रांच है लाइट, जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिक्स, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी ब्रांचेज हैं फिज़िक्स की। मैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये सारी फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं। अब क्यों ये फिज़िक्स की ब्रांचेज बनाई गई हैं? ताकि हम फिज़िक्स को हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो ब्रांचेज हैं ये मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करती हैं। बाज़ ब्रांच लाइफ के अंदर एक एरिया को कवर करती है, बाज़ दूसरी ब्रांच को, बाज़ दूसरी ब्रांच दूसरे एरिया को कवर करती है। तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, लाइफ के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेज अप्लाई होती हैं। तो लिहाजा हम हर एक ब्रांच को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल फिज़िक्स क्या है? जनरल फिज़िक्स में, जिसको मैकेनिक्स भी कहते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें बॉडीज़ की मोशन को पढ़ते हैं कि बॉडीज़ मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, और उन बॉडीज़ के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस को हम पढ़ते हैं। तो हम बॉडीज़ की मोशन को पढ़ते हैं और उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस को पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसमें मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को पढ़ते हैं, उनके यूनिट्स को पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ते हैं। ये चीज़ हम पढ़ते हैं जनरल फिज़िक्स में। उसके बाद थर्मल फिज़िक्स आ जाती है। थर्मल फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और हीट एनर्जी के जो रिलेटेड प्रोसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं थर्मल फिज़िक्स में। अब रिलेटेड प्रोसेस कौन से हैं? मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, एवोपरेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, कैसे हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, ये सब हम पढ़ते हैं थर्मल फिज़िक्स में। आगे है वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन कौन सी ब्रांच है? कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं वेव्स के बारे में और उनका ताल्लुक ऑसिलेटरी मोशन से क्या है। तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं क्या? कि वेव्स के बारे में पढ़ते हैं और वेव्स का ऑसिलेटरी मोशन से ताल्लुक क्या है। इस ब्रांच को वेव्स एंड ऑसिलेशन कहते हैं। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन में क्या पढ़ते हैं कि वेव्स क्या है और वेव्स का ऑसिलेटरी मोशन से ताल्लुक क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ वेव, वेव क्या है, वेव को कैसे क्रिएट किया जाता है, और वेव्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं इसमें। तो ये है वेव्स एंड ऑसिलेशन। आगे आती है ऑप्टिक्स, जिसको लाइट भी कहते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं और लाइट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ते हैं और लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है, ये सब कुछ हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। आगे आ जाता है साउंड। साउंड कौन सी ब्रांच है? ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं साउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो साउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी है उसको साउंड कहते हैं। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड ट्रेवल्स, हाउ साउंड इज़ रिसीव्ड, व्हाट इज़ पिच ऑफ द साउंड, व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ द साउंड, ये सारी चीज़ें हम साउंड के अंदर पढ़ते हैं। आगे ब्रांच आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कौन सी ब्रांच है? कि इसमें हम पढ़ते हैं वाटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हेयर वी स्टडी व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड।
तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या क्या हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। इस सब को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं। और इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, मसलन एक्स रेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सब कुछ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। आगे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस के। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेस्ट चार्जेस और दूसरे होते हैं मूविंग चार्जेस। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस बनाई गई हैं, दो सब ब्रांचेस, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं रेस्ट चार्जेस के बारे में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं मूविंग चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के बारे में और चार्जेस में रेस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी है आगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच को सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें एटम्स जो हैं एक ख़ास तरतीब से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उस किस्म के सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी को सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। आगे आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है, ये वो ब्रांच है जिसमें मैग्नेट और उसके रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। सो द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेट एंड इट्स रिलेटेड प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर हैं, आईसीज हैं, इन सब को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। आगे है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में है, किस किस फील्ड में न्यूक्लियर फिजिक्स अप्लाई होती है, इस सारी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन से, पॉपुलर न्यूक्लियर रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन, ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। आगे है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स कौन सी है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं उसको प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है, ये आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर को जब आयोनाइज किया जाता है, स्पेशली गैसेस को, तो वो उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा की स्टडी को प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। इस तरह आ गया एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। ये वो कौन सी ब्रांच है, ये वो ब्रांच जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनका आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनका आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, लिप्टॉन, क्वार्क्स, फोटॉन्स, बोसॉन, इन पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं और इनका आपस में रिलेशन क्या है, इस सारी स्टडी को हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। आगे आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं एटम की स्ट्रक्चर क्या है और एटम्स की प्रॉपर्टी क्या है। एटम की स्ट्रक्चर क्या है और एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस सारी स्टडी को एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। सो क्या पढ़ते हैं हम, हेयर वी स्टडी के इसमें हम पढ़ते हैं एटम के न्यूक्लियस के बाहर जितना पोर्शन है उस सारे पोर्शन की स्टडी को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम की स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में ये कहा जाता है कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर जितना पोर्शन है उसकी सब की स्टडी को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। ये आगे है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स क्या है, इसमें हम अर्थ को स्टडी करते हैं, अर्थ की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। तो अर्थ की स्टडी, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना और उसकी एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, किस तरह स्टडी करना, फिजिक्स के प्रिंसिपल की बेस पे, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके अर्थ को स्टडी करना, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, इसको जियो फिजिक्स कहते हैं। अब जियो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में, कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, अर्थ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करती है, इसको पढ़ते हैं। वेदर के बारे में पढ़ते हैं।
लेकिन किस तरह पढ़ते हैं? फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इस सारी स्टडी का नाम है जियोफिज़िक्स। आगे बायोफिज़िक्स आ जाती है। बायोफिज़िक्स क्या है कि बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को किस तरह पढ़ते हैं? फिज़िक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके। तो फिज़िक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके बायोलॉजिकल सिस्टम की को जो स्टडी किया जाता है, इस सारी स्टडी का नाम है बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ वी स्टडी द लिविंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की टेक्निक्स को यूज़ करके हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करते हैं, इस सारे नॉलेज का नाम क्या है? बायोफिज़िक्स। आगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस सारी स्टडी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। मसलन हीट इंजन है, हीट इंजन में हीट एनर्जी किस तरह किधर जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो हीट इंजन में हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस स्टडी का नाम है थर्मोडायनामिक्स। आगे आती है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है? ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हेवी बॉडीज़, मसलन सन, स्टार, मून के बारे में पढ़ते हैं। तो सन, स्टार, मून्स की जो स्टडी है, इसको एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। और क्या पढ़ते हैं कि सन, मून, स्टार्स, इनके दरमियान डिस्टेंसेस कितने हैं। तो एक सन, मून, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा इनके दरमियान डिस्टेंसेस कितने हैं। इस सारी स्टडी का नाम है एस्ट्रोफिज़िक्स। आगे आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? ये वो ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में जितने प्रोसेस हैं, जितनी मेजरमेंट हैं, जितने इवेंट्स हैं, ये सब के सब रिलेटिव हैं। तो ये रिलेटिविटी का कंसेप्ट कि जितनी मेजरमेंट्स, जितने प्रोसेस और जितने इवेंट्स हैं, सब के सब रिलेटिव हैं, इनमें कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस स्टडी ये रिलेटिविटी वाला जो कि जितनी मेजरमेंट्स हैं और जितने प्रोसेस, जितने इवेंट्स हैं, ये रिलेटिव हैं, इसमें कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस ब्रांच का नाम है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी वो ब्रांच है जो हमें कंसेप्ट देती है कि जितने मेजरमेंट, जितने इवेंट, जितने प्रोसेस हैं, सब के सब रिलेटिव हैं, इसमें कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। और उसमें हाई स्पीड बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मसलन क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्या पढ़ते हैं? वो मोशन जो नियरली इक्वल टू लाइट है। इस सारी स्टडी को हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। और ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अगली ब्रांच आती है हेल्थ फिज़िक्स। हेल्थ फिज़िक्स क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं रेडिएक्टिव रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि रेडिएक्टिव रेडिएशंस लिविंग बॉडीज़ के लिए किस तरह हार्मफुल हैं और इन रेडिएशन से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस स्टडी का नाम है हेल्थ फिज़िक्स। तो हेल्थ फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रेडिएक्टिव रेडिएशंस, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज के हार्मफुल इफेक्ट्स लिविंग बॉडीज़ के लिए क्या है और इन रेडिएशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस सारी स्टडी का नाम हेल्थ फिज़िक्स है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज कैसे लिविंग बॉडीज़ के लिए नुकसानदेह हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। इसको हेल्थ फिज़िक्स में पढ़ते हैं। आगे है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ये वो ब्रांच है जो हमें कंसेप्ट देती है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। किस शक्ल में? क्वांटा की शक्ल में। कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्वांटा की शक्ल में ट्रैवल करती है। क्वांटा एक पार्टिकल कहते हैं, यानी मतलब है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल की शक्ल में ट्रैवल करती है। तो इस स्टडी को हम क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। तो क्वांटा एक पार्टिकल है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल की शक्ल में ट्रैवल करती है। तो इस पार्टिकल को हम क्वांटम फिज़िक्स में कहते हैं। इस पार्टिकल को इन पार्टिकल्स को क्वांटा कहते हैं और क्वांटा की स्टडी को हम क्वांटम फिज़िक्स में कहते हैं, स्टडी करते हैं। तो क्वांटम फिज़िक्स में सिंपली हम ये पढ़ते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल की शक्ल में ट्रैवल करती है और इन पार्टिकल्स को क्वांटा कहते हैं और क्वांटा की स्टडी को क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। आगे है स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। ये कौन सी ब्रांच है? ये वो ब्रांच है जिसमें फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स के मेथड यूज़ करके फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम को स्टडी करना, इसको हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं
कि कैसे स्टेटिस्टिक्स के मेथड को यूज़ करके हम फिज़िक्स के प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। तो इस सारी स्टडी का नाम है स्टेटिस्टिकल फिज़िक्स। तो ये सारी हमने पढ़ा है फिज़िक्स, और उसकी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को हमने स्टडी किया है। So today we have studied physics and the different branches of physics, and these all videos lectures are for your benefit, and all the students of the whole world, they can take benefit from these lectures. So by using these videos lecture, you can prepare yourself very easily, and you can take benefit from these lectures from the YouTube. You all are requested to subscribe the channel so that you can get all the new videos. Thank you.